These are visuals of the last few hours of this cow in a land which has elevated the animal to the status of a revered mother or Gaumata. All these cows at a temporary camp set up in Gandhidham are suffering from lumpy skin disease. Lumpy skin disease affects cattle and buffalo and is caused by capripox virus. Eventually, the nodules burst, causing the animal to bleed. There is currently no cure for the viral disease, and treatment mostly targets clinical symptoms. The disease gets its name due to the large, firm nodules that develop on the skin as a result of the disease. Depression, conjunctivitis, and excess salivation are some other symptoms found in the diseased cows. Several districts in Gujarat are affected by the virus. Right now, we are standing in Gandhidham at a cow shed where infected cows from around 25 kilometers radius of this city are collected, are isolated and brought here for treatment and care. And with me I have the whole set of volunteers who have been looking after these infected animals for a long time. According to them, from what they tell me, I understand that the first infections started coming in sometime around June, and since then they have been looking after these animals. देखिए कि यहाँ पे जो गाय आती है वो सब कहाँ से आती है, कौन सी गाय? ये यहाँ पे लगभग 25 किलोमीटर का हमारा एरिया फिक्स किया हुआ है। 25 किलोमीटर के अंदर से हम कोई भी बीमार गाय को लेके आते हैं। जो लंपी वायरस की जो बात हो रही है, लंपी का कोई भी केस है वो हम यहाँ पे लेके आते हैं। सारे जो गौ माता आती है वो सब लंपी वाली है। तो ये किसी के घरों से आती है या ये जो स्ट्रे काउ है वो? दोनों स्टेट में से भी आती है और मालिक की होती है, दोनों है। जो भी गौ माता को, मतलब हमने जो ये सेंटर खोला है वो एक तो गौ माता को बचाने के लिए खोला है, तो उसमें फिर कोई बाइफर्केशन नहीं किया है कि किसकी हम लेंगे या नहीं लेंगे, सबकी गौ माता लेते हैं और सबकी हम ट्रीटमेंट करते हैं। सर, आपके पीछे जो है यहाँ पे मुझे बहुत सारे यंगस्टर दिख रहे हैं, ये सभी वॉलंटियर्स हैं? हाँ, इसमें यहाँ हमारे जो साथ है यहाँ पे ज़्यादातर वॉलंटियर्स है और डॉक्टर्स की टीम भी ज़्यादा है। हमारे पास यहाँ पे 21 डॉक्टर्स है जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें से 50% लगभग डॉक्टर भी है और वॉलंटियर्स भी है। A little over 50 kilometers from Gandhidham is a small town of Samkhyali. A small plot next to a bus depot has been converted into a cow camp by local volunteers. Kanjibai Ahir has gathered a group of over 30 volunteers who respond to calls from locals who want their infected cows to be taken care of. Ahir and his volunteers are untrained in veterinary sciences. They have support from a Jain religious group that is supplying them with medicines and Ayurvedic formulations. Among these include nimesulide, an anti-inflammatory drug, and paracetamol injections alongside Ayurvedic herbs. Ahir told ThePrint that next to no help was received from the government. This camp in Bachao is faring better according to the volunteers. Located in a well-established Gaushala, the camp is well-funded with animals with the infection being identified at an early stage. We are currently at a Gaushala in Bachwa in Gujarat, where a number of diseased and infected cows have been separated from the healthy ones. As you can see here, right next to me is one of the cows that has very visible symptoms. These black marks that you see are those visible symptoms of lumpy skin disease. According to what we have been told, once these lumps, these small lumps sort of burst out, that's when the cow is sort of recovering. It's good for them if it's on the outer side of the skin. But these lumps can even burst inside the cow, which is when it is very difficult to treat them. We are here talking, we will now speak to the manager of this Gaushala, and he will tell us more about how the treatment is being done and how the entire process of separating, identifying the diseased animals and separating them from the healthy ones is being done. तो अभी जो है आप लोगों के पास आपको कब से ये सारे जो इन्फेक्शन जो है यहाँ इस सेंटर में कब से मिल रहा है? करीबन 2 महीना हो गया। 2 महीना पहले पहला केस आया था। जैसे पहला केस आया उनको अलग कर दिया,
अलग रखते हैं, अलग उसको खाना पीना सब अलग से, दवाई सब चालू कर दिया। तो अभी डेली कितने केसेस आ रहे हैं? अभी डेली 3-3 आ रहे हैं, 3-3 दिख रहे हैं डेली। और यहाँ पे आप थोड़ा जैसे मुझे बता रहे थे आप ट्रीटमेंट के बारे में कि आप लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, सबसे पहला जब केस आया तो हमने वेटरनरी डॉक्टर का कांटेक्ट किया। डॉक्टर ने बताया कि पोटेशियम परमैंगनेट नाम करके पाउडर आता है, वो पाउडर जो गाय जिसमें पानी पीती है, हम अवाड़ा बोलते हैं, उसमें डाल देते हैं। और इसका जो खाना पीना रहता है, सूखा खाना देते हैं। सूखा खाना देंगे तो पानी ज़्यादा पिएगी, पानी ज़्यादा पिएगी तो डॉक्टर का ऐसा कहना है कि पानी ज़्यादा पिएगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी, और उसका रिजल्ट मिला है। ये गाय में लंपी बीमारी आई जब, तब पहले ज़्यादा मरण हुआ, क्योंकि कहीं पर पता चला किसी को कि लंपी का बीमार है गाय वंश, तो वहीं उसकी ट्रीटमेंट हो जाती थी। फिर वहाँ से दूसरी जगह पे वो गाय चली गई, तो दूसरे ने किसी से फ़ोन किया, वहाँ पे दूसरे लोग पहुँच गए और उन्होंने भी उसको डोज दे दिया। तो ऐसे 2-3 डोज लगने की वजह से भी बहुत सारी गाय का मरण हो गया है। यहाँ शहर में भी हुआ है और आसपास के विस्तार में। जब इन लोगों को पता चला तो मैंने फिर इनको बोला, भाई आप जहाँ पांद्रापुर में लेके जाते हो तो वहाँ पे आप 6 या 8 घंटा तक कोई दवा मत करो उसकी। आयुर्वेदिक कोई है तो आप दीजिए उसको, लाडू दीजिए, ठंडी की ठंडाई दीजिए उसको, ऐसा दीजिए, पर जो दवाई है वो 8 घंटे के बाद दीजिए। While the Animal Husbandry Department pegs the number of deaths from disease over the last month at just over 1,200, volunteers at local camps say that the number is likely to be much higher, probably in tens of thousands. We witnessed mass burial grounds in Gujarat, but before the outbreak became widely known, the Nagarpalika was dumping infected carcasses in the open. This was a dumping ground where we found several rotting carcasses being scavenged by dogs. Healthy cows would also roam in the area, which led to further spread. An unbearable stench hangs over the entire area. Some of the carcasses are weeks old, according to the locals. These are some visuals that we witnessed from the camp in Gandhidham. The city is teeming with street cattle infected with the disease. In one day, we witnessed 18 deaths in a single camp. All of the bodies were loaded in tractors and then taken to the burial ground. Here, in deep pits, all the cattle were dumped along with salt and covered with mud. These are a line of pits that have been filled from the Gandhidham camp in the last few weeks. Meanwhile, in Samukhyali, the pit is not fully covered. As one can see, old carcasses got a shallow burial and the dogs are tearing away at the carcasses. Here too, initially some of the cattle was just being dumped in the open. We have already witnessed several mass burials and the infections continue unabated. We will, at ThePrint, continue to track this story from the ground and go to other districts and other places to understand how the infection has affected the families of those who take care of cattle. This is Mohana Basu, special correspondent at ThePrint, reporting with our national photo editor, Praveen Jain.